हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट बाय एविएशन लीड। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर नील हैं। एंड अगर मिस्टर नील हैं, यू नो द टॉपिक इज ऑल अबाउट एविएशन, एरोस्पेस एंड डिफेंस। वी नो फॉर अ फैक्ट दैट देर आर एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो ट्वेल्थ के बाद बच्चे चूज कर रहे होते हैं। बट एविएशन, एरोस्पेस और डिफेंस को वो पसंद तो करते हैं, बट दे डू नॉट want to go to this industry, or they do not know how to go to this industry, let's say. Maybe they are not aware about the pros and cons of these industries. So आज के हम पॉडकास्ट में सिर्फ यही बात कर रहे होंगे कि why should a person, a candidate, a student should choose aviation, aerospace and defense as their go-to career option. Sure. So thank you so much for giving your time here. I know this, through this podcast आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाती है उन व्यूअर्स के साथ जो अभी भी थिंकिंग स्टेज पे हैं कि उनको एविएशन, एरोस्पेस और डिफेंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और शुड दे गो टू देयर गो टू प्लेटफॉर्म्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए, दैट्स द Correct. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Understood. So yeah, Thank you, Aryan. So thank you for having me here. It's a pleasure. Uh, so before I start, Aryan, I think the topic that you have picked, this is one of my favorite topics, right? So being in the industry from last 18 years, I have seen the journey so far. मेरे को पता है जब एक बच्चा कोई 12th क्लास में होता है या 10th में होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? yeah, I know. When someone is in, let's say, working for XYZ company, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? So I can correlate, and I think that's the reason I picked this topic. Yeah. And I would be happy to answer all your questions. And I'm sure people would be they'll feel elated to know that this is being considered on a YouTube podcast as well. Yeah, Because yeah. I think no one is answering this. Exactly, and So- and that's what the objective of aviation indeed is. Our objective is to help people grow, Yeah, and exactly. that's why what time is it? It's 8:15 p.m. Yeah. लोग शायद खाना भी सो चुके होंगे, and we're still talking, Yes. right? Exactly. So when you love something, you will put your best energy. You will put your best efforts to make sure that whatever you have learned from your journey so far, you give it to others. Yes. So that's where the fun is. Over to you, Aryan. So, for the viewers, we will keep referring to these questions that we have received from candidates, or we know that these are the questions that our candidates may ask, the students may ask. So, we'll keep referring to these sheets that has all the questions that you would want to ask. And if we miss out on any, you are definitely can write down a comment or DM to Mr. Neil, to me personally, or on our Aviation Lead channel as well. So, और आर्यन तैयारी मैं भी करके आया हूँ. oh, all right. Yeah, so I have a document too. So I will try to answer all your questions, but if I miss out on anything, so let me know. Probably Yes. I can come up with the better answer. Definitely. All right. So, first question then and there. Why should a person, a candidate, or a student consider aviation, aerospace, and defense as their go-to industry or their go-to career? ऐसा क्या है इन तीनों industries में that will sustain their livelihood, let's say? क्योंकि a person would want to choose this for the love of it, for livelihood of it, for money, for fame, whatever. So, what is there in this industry? I think so. Before I answer this question, I think people should know on what basis I'm going to answer this question, right? Okay. So let me help you with. अगर किसी ने हमारा पुराना वाला podcast नहीं देखा है इससे पहले वाला, so let me help you with who we are and what exactly we do, so that they have an understanding कि किस basis पे हम लोग बात कर रहे हैं. Yes. Before that, the link to that podcast will also be in the description below. You can go ahead and watch that and also share your comments on that. Sure. Yeah, please, Mr. Neil. So like I said, जीत की खुशी वही बता पाता है जो हारा हुआ हो. Exactly. राइट. सो इंडिया भी रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता. Yes. आई थिंक वो वर्ल्ड कप की खुशी ना वो इंडिया नहीं बता सकता जितना वो साउथ अफ्रीका बताएगा. Yes. I know. I can ठीक get है. it.
same goes with me. So वो बार बार हार के और फिर वो जो जीतने का जो टेस्ट है ना, वो आई थिंक मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ इस इंडस्ट्री में. सो आई कीप इट शॉर्ट. Yeah. So I started as an aircraft engineer, did my aircraft maintenance engineering, और उसके बाद I didn't get job, so I started working for my own college. Uh, did a couple of BPO jobs, worked with a company as a receptionist. Did multiple activities just to make sure I earn enough money to make sure that I survive. घर पे हम लोग जा नहीं सकते, घर पे बता नहीं सकते थे. So, and then I realized that there is a huge gap between companies looking for the right talent and people looking for the right job. So that's how it all started. So starting from an aircraft maintenance engineer, and till now, so journey is still, I'm still growing, I'm still learning, I'm still figuring out what is the best way, how can I serve this industry in a better way, or how can I contribute towards the betterment of the society, or considering India as a growing country, so how can I help people grow, right? Yeah. So that's the, in short, crux of how it all started. uh, and as far as aviation indeed is concerned, so we are acting as a mediator between airlines, aerospace companies, OEMs, MROs, and candidates. Yes. Right. So especially for those who are experienced, now they want to switch. And on the other side, we have companies looking for the talent. Yeah. So we are matchmakers, Yes. not Shaadi.com wale matchmakers, but So yes, let's call talent them talent matchmakers. matchmakers. Talent Yeah. matchmakers. So that's who we are in short. And recently, Aryan, we realized that it is not about just helping those who are working somewhere and they want to switch to some other company, or we have a company looking for the talent. Considering we have more than 10 million new jobs coming in next couple of years. So we realize that what about those who are just freshers, right? What skills they should have. So now we are doing staffing. We are helping students who are in grade 11th, 12th. So we are helping them with multiple programs that are there in the market. How to become an aircraft engineer, or aerospace engineer, or a cabin crew, or a ground staff. Yeah. So that if their goal is to become an airline engineer, so what is that it takes to become an airline engineer, right? So वो उनके छोटे छोटे जो डाउट्स हैं, मैं कहता हूँ शायद कोई मेरे को बता देता. Okay. शायद मैं जो मेरे जूनियर्स थे या सीनियर्स थे, शायद उनको पता होता, मेरे को शायद मेरे पास कोई एक मेंटोर होता. तो उन सारी चीजों को लेके हम लोग, so that's why we are here in the industry, and that's why we makes aviation indeed is a it's not a company, Yeah. but I think it's a one stop shop wherein you have questions, come to us, we'll give you answers. Yes. Okay. Okay, बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं. No, that's exactly what we or the viewers would want, and very inspiring actually. The journey has been really inspiring for aviation lead. Uh, I remember you mentioning in the first podcast that अगर वो बच्चे पूछेंगे ही नहीं तो उनके डाउट्स क्लियर कैसे होंगे, एंड अगर कोई पर्सन उनके पूछने पे ही पैसे लगा देगा तो हाउ वुड दे आस्क. एंड another very important thing that you missed aviation lead is doing is the podcast. Exactly. Because many people will not ask, but they may get their answers in such podcasts, right? बिल्कुल. We are India is a land of seekers. seekers, exactly. So, how is aviation lead? As you mentioned that there are million jobs that are coming, right? There are n number of jobs that requires quality talent, but अभी है ही नहीं market में. How is aviation lead ensuring that ये close हो जाए? What is the current landscape? अभी कैसा दिख रहा है aviation
का पूरा सेक्टर इंडिया में, एरोस्पेस का पूरा सेक्टर, डिफेंस का सेक्टर, एंड मे बी यू कैन ड्रॉ पैरेलल्स हाउ इज एविएशन नीड रनिंग साथ साथ उसके. Okay. So, in short, if you see, uh, India has on an average around 600 commercial aircrafts. ठीक है? Yeah. And do you know how many aircrafts are we expecting in next couple of years? No, I would not know that. Again, as a layman, I would ask you. So we are expecting around 2000 to 2500 new commercial aircrafts. Oh. मैं सिर्फ commercial aircrafts की बात कर रहा हूँ guys. Oh, that's huge. Okay. Right. So which is now you can calculate it. कितने percent हम लोग extra we are expecting. Now to cater to these number of aircrafts, we need MROs who can maintain these aircrafts. We need assembly lines where we can actually manufacture these aircrafts. क्योंकि तुम कितने import कर लोगे? Yes, agreed. Right. So if we have, the requirement is if we have more than 2000, it means we have aircraft manufacturers coming here in India. MROs are focusing here in India. Okay. So I'll give you a little brief about what is there in news media in the media, wherein you will get to know कि क्या क्या एक्टिविटीज इस इंडस्ट्री में हो रही है, सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या आने वाला है, राइट? सो प्रोबब्ली विल कीप इट फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट, बट फॉर नाउ so we have more than 2000 expected aircrafts. Now to find experienced people, to find skilled people who will help them. So one challenge is someone is working with XYZ company, and what if we don't have a supply? मतलब 12th के बाद Yes. अगर कोई एविएशन में आ ही नहीं रहा फिर क्या करोगे? Yes, I get it. And in short, अगर numbers की बात करूं, we are expecting, like I said, 10 million employees in the same industry, which includes, I would say, around 38,000 pilots, just pilots. 1.5 लाख के आसपास तो हमें ग्राउंड स्टाफ चाहिए. कहां से आएगा? जब तक हम लोग लोगों को अवेयर ही नहीं करेंगे कि post 12th go to aviation or go to aerospace or go to defense, there are a list of opportunities that you have. कोई नहीं आएगा, right? So based on the objective that we have, based on the number of expectations in terms of number of aircrafts, we have to figure out कितना हमें supply चाहिए, कितना talent चाहिए, कितना हमें infrastructure चाहिए. The government is putting its best efforts, but being a staffing agency, we have to make sure कि उतना talent अगले 10-20 साल तक हमारे पास हो. That's what we are doing. Okay, all right. So, all right. So, as you said, there are n number of jobs opening that are going to come. There are a few job openings that are there also. What are some of the high demand jobs that a person can aim? I know there are different aviation jobs that a person can aim, right? But कुछ ऐसे जॉब्स होंगे जो हाई इन डिमांड हमेशा से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, मे बी 2x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे. But what are these high demand jobs that a person can look up to? Maybe a 12th class student, if he does not know कि मुझे ये इस जगह पे पहुंचना है, इस जॉब को मैं करूंगा तो आई थिंक मैं सेटिस्फाइड रहूंगा पूरी जिंदगी. कौन से हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जिसमें वो बंदा लेट्स से अपने आप को वो प्रिपेयर करना शुरू कर सकता है उस चीज के लिए? Understood. So before I answer this question, मेरे को थोड़ा सा तुम्हें और बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकलैश लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में दूं, so that you have an understanding, right? So if I talk about international aviation, और ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्लोबल एविएशन और एरोस्पेस इंडस्ट्री सबसे पहले, so and I will refer this document क्योंकि बड़े बड़े ज्यादा नंबर्स है, मैं याद नहीं रख पाता हूँ. So 10 साल पहले we had around 23,000 commercial aircrafts. Okay. ठीक है. Till now we have around 28,000 aircrafts. ठीक है.
उसमें से इंडिया के पास करंटली वी हैव अराउंड 600 प्लेन्स. सो मतलब आउट ऑफ 28,000 इंडिया के पास सिर्फ 600 एयरक्राफ्ट हैं. एंड बाय 2034 इंडिया विल बी 2.5 टाइम्स लार्जर. Oh, okay. मतलब वो जो मैं 2,500 के Yes, आसपास की जो yes. बात कर रहा था, इंडिया वहां पे जाएगा. सो आउट ऑफ 28,000, अगर अभी ग्लोबली इंडिया ओवरऑल अगर ग्लोबली हम लोग बात करें, इफ इट्स 28,000, तो शायद वो 40 तक पहुंच जाएगा. आउट ऑफ 40,000 इंडिया इज गोइंग टू हैव अराउंड 3,000 के आसपास एयरक्राफ्ट. Okay. Mhm. Right, which is huge number, Very right? very huge number. So now if I talk about number of airports in India, Mhm. so for now फिलहाल इंडिया के पास वी हैव अराउंड 148 एयरपोर्ट्स. Okay. 2014 में नंबर वाज 94. All right. ठीक है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर दैट आई एम गोइंग टू शूट. बाय 2030 तक इंडिया इज गोइंग टू हैव 230 एयरपोर्ट्स ऑल टुगेदर. Wow. Okay. ठीक है. नाउ लेट मी गिव यू अनदर फिगर फॉर ड्रोन मार्केट साइज. So in 2024, the drone market size was valued at $10 billion Mhm. in India, and it is expected to grow to $12 billion by 2029. Okay. So have you heard of Archer? So Archer is a company Yeah. recently tied up with IGT, Mhm. Interglobe Technologies, and they are going to start a taxi in India next Yes. couple of years. Yeah. तो I came to know that imagine news. कि Yeah. Mhm. हमारी इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है. Mhm. So we are going to have a taxi wherein, you know, if you're sitting at CP and you have to go to Gurgaon, you don't have to take a cab or something. तुम a taxi लो Yes. और तुम गुड़गांव आ जाओ. Yeah. ठीक है. Just an example. Mhm. ठीक है. So and then if I talk about aerospace and defense market growth, another you know good number. So by 2033, aerospace and defense market is expected to reach to 55 billion Wow. dollars. Okay. Right? And it will grow at an average yearly rate of 7%. 7%. Right? And by 2034, the number of commercial aircraft is expected to reach to 36,000. तो जब हम लोग बात कर रहे थे अराउंड 40 के आसपास, हाँ जी. एग्जैक्ट नंबर इज 36,000. Kudos to your fact checking, man. I mean, I mean, just talks numbers. 10% अप डाउन हो सकता है, Yeah. बट हाँ. सो दिस इज, सो आई मीन टू हैव एन आइडिया कि क्या होने वाला अगले 10 सालों में, you will be able to evaluate out of you know these figures. Now coming to the question that you asked, Mhm. what are some of the most in demand roles in these sectors right now? Yeah. ठीक है. इसको बड़ी लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ. Now to fly more than 2,000 aircrafts, Mhm. what is the basic need that we have? Pilots, I guess. Pilots. Yeah. Cabin crew. Cabin crews. Without pilots, cabin crew, aircraft cannot fly. Support staff, Mhm. aircraft maintenance engineer, Mhm. flight operations staff, Mhm. right? Then we have ground staff to take Yeah. care of. Mhm. I mean, there are, I can give you a list of multiple roles Mhm. who will, you know, who will take care of these equipments. Got it. We have ramp staff, we have another technicians, we Mhm. have helpers, blue collar staff. Mhm. Oh my God, you name it, we have. So the profiles that you mentioned, pilot, aircraft maintenance engineers, uh, cabin crew, flight attendants, even ground staff, these are the jobs that a person would know maybe. What else? Like, because these many job opportunities, this is the gap if they are seeing. I'm sure there are endless jobs under this also. A airline would not function without other job opportunities as well, right? So, what all are the other jobs? This is something which I think people would know, obviously. Uh, what all other jobs are there for people? Okay. सो मैं इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करता हूँ. Okay. ठीक है. टू सपोर्ट एन एयरलाइन,
like I said, we need pilots, cabin crew, aircraft engineers, we need flight operation staff, इसके अलावा we need security staff, Yeah. ठीक है, we need ramp staff to take care of the flights if they are coming on time, going on time. uh, apart from that uh, we have aerospace engineers, we have aeronautical engineers, and then we have sales team who's selling tickets, we have marketing team who is selling, who is the one who behind branding and everything, we have uh, logistics team, supply chain, और मैं कितने नाम बताऊं. Yeah, so I think people in here would relate a lot because aviation, aerospace को सुन के लोगों को है कि भाई pilot, cabin crew, ground staff. But there are desk jobs also. I am बिल्कुल. sure. I heard Air India, revamped their logo. I'm sure there's a graphic designer involved. There is a research team involved. Exactly. Their uniforms were Cyber getting. security. Yeah, cyber security is one ठीक of है. the things. ठीक है. सो मैं नंबर्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ. ठीक है. सो नाउ टू हेल्प यू विद दीज नंबर्स मैं बताता हूँ लगभग लगभग ऑन एन एवरेज हमें कितने लोग चाहिए विद द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. ठीक है. अगेन आई वुड रेफर दिस डॉक्यूमेंट. सो ऑन एन एवरेज वी नीड अराउंड 35,000 to 37,000 pilots in next couple of years. That's year wise. अगले 10 साल हम लोग एक डिकेड की बात कर रहे हैं. जब तक हमारे पास once we will reach the number which is let's say 2,000 plus aircrafts, commercial aircrafts. Yes. Okay, so we would be needing around 37,000 new pilots. Cabin crew का number is around 60,000. Wow. Guess aircraft engineers कितने चाहिए होंगे? Any guess? 10,000, I guess. I don't know. नहीं. So around 40,000 के आसपास we need aircraft engineers. We need ground staff and support roles, which is 1.5 lakhs. Corporate staff 30,000. Aerospace engineer 1 lakh. Aerospace technicians and skilled workers 50 lakhs. Aerospace support and logistics staff 20,000. Defense engineers 50,000. Defense technicians and skilled workers 40,000. Defense support and administrative roles 30,000. Drone engineers and technicians 10,000. Drone operators and pilots 5,000. Drone support staff 5,000. So मैं लगभग तुम्हें on an average मैं तुम्हें बता रहा हूँ based on the data that I have collected from the that I have received. So ये कुछ मोटे मोटे मैं तुम्हें नंबर्स बता रहा हूँ. पूछो कोई क्वेश्चन पूछना भी इसमें से. Wow. So obviously, people again, as I said, a layman would not know or would not consider कि यहाँ पे desk job भी तो होंगे, right? बिल्कुल. And with these numbers, I think all the viewers, why are you not going to aviation, man? I mean, endless job opportunities are there. उस पर मैं आऊंगा. अभी अभी नहीं आऊंगा, एंड में आऊंगा कि ये लोग क्यों नहीं जाते हैं. Oh, do we have an answer for that also? हाँ. All right. Okay. बिल्कुल है. So okay, with these numbers, definitely people would want to know क्यों आए वो एविएशन में, एरोस्पेस में, डिफेंस में कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या ये जॉब स्टेबल है? क्योंकि वी नो फॉर अ फैक्ट दैट नो जॉब इज स्टेबल, क्योंकि कुछ भी कभी कहीं पे भी क्विटिंग हो सकती है, पीपल कैन बी फायर्ड. Is it a stable job in aviation, aerospace and defense? What are the benefits, some perks, some benefits that a person may get? And what is the career trajectory? अगर एक नया person है, वो join कर रहा है, वो कहाँ तक जा सकता है? What is something which he or she can aim at aviation segment? See, so this industry is for those who have a brave heart. All right. ठीक है. Ups and downs, you saw. I remember when Jet Airways took over Sahara, then Kingfisher गया, फिर उसके बाद Jet Airways खुद चला गया. Now you see Go के साथ क्या हो रहा है, right? So ups and downs तो हैं, किसी भी इंडस्ट्री में है. ठीक है. Yes, that's true. But प्रॉब्लम पता किन के लिए है? प्रॉब्लम उनके लिए है जो लोग खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स. Okay, yeah, that's for any industry actually. Exactly. Yeah. So if you feel कि मैंने अभी so I am
working as a, let's say, an airport manager Mm-hmm. or a ground staff. Mm-hmm. अब तो मैं ये टर्मिनल मैनेजर बन के निकलूंगा, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट हैपनिंग. True. जब तक आप छोटी छोटी स्किल्स पे काम नहीं करोगे, Mm-hmm. you will, you will be out of this industry very soon. So now to answer your question, so you have great perks and benefits. You have, when you fly with airlines, when you Mm-hmm. work with airlines, you get free tickets. ठीक है, स्टेबिलिटी है. ठीक है, आई हैव सीन पीपल वर्किंग फॉर मोर देन 20 years with one airline only or with Okay. one company. Mm-hmm. ठीक है, so स्टेबिलिटी भी है. It's just, when people do not uh, upgrade their skills, that's where the challenge is. Yeah. ठीक है, let me help you with an example. Suppose if someone is an aircraft maintenance technician, Yes. now how can he grow? लोगों को लगता है कि अगर वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, he'll be aircraft technician for the rest of his life, but that's not true. I have seen people becoming MRO heads. I have people seen becoming Oh. CEOs of these MROs. Yeah. So MRO is maintenance repair, Mm-hmm. right? So there is a growth, but provided if you keep working on your skills. Okay. ठीक है, Yeah. so you become a technician, then you become a licensed engineer, then you become a senior or lead AME, then you become a manager, then उसके बाद there are multiple opportunities. Okay. But अगर कोई एक manager है, so he should know how to lead his team, he should know how to take care of his people, uh, learning, and of course he will also make sure कि पूरी कंपनी भी तो ग्रो कर रही है ही नहीं कर रही है, Yeah. राइट. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पीपल दे डोंट थिंक ऑफ इट, Yes. Got it. right. So another example I would tell you, someone who has around, let's say, 10 years or 15 years of experience. Mm-hmm. So a couple of my friends, they started with me, right, and so we had a group of 4 5 people, and a couple of them moved to some other domain. कुछ लोग कनाडा यूएस चले गए, कुछ लोग इसी इंडस्ट्री में रुके रहे. Now someone having 10 to 15 years of experience, he is getting the same salary. कितनी सैलरी जितनी कोई यूएस में बैठ के काम करता है. Oh, okay. What else you need? Mm-hmm. And I'm talking about aircraft maintenance engineers here. Mm-hmm. So skilled worker की डिमांड है, Got it. वो हमेशा ही रहेगी. डिमांड उनकी नहीं है, लाइक आई सेड, जो लोग खुद पे मेहनत ही नहीं करना चाहते. That's where the gap is. That's an old proverb also ना कि वक्त के साथ चलो तो सब कुछ अच्छा चलेगा. And adaptability is Adaptability. something जो यहाँ पे question हो रही होगी. Okay, so as you mentioned about your friends as well, क्या इंटरनेशनल स्कोप अच्छा है एविएशन, एरोस्पेस और डिफेंस का? अगर कोई पर्सन, क्यों एक पर्सन कंसिडर करे कि वो इंटरनेशनल भी जा सके, या लेट्स से इवन आउटसाइड इंडिया अगर कोई काम कर रहा है, मे बी उसको इंडिया में बेटर अपॉर्चुनिटी मिले. एंड इफ लेट्स से पीपल आर वाचिंग दिस आउटसाइड इंडिया, दे वुड आल्सो वांट टू नो कि इंटरनेशनल जाना कैसे बेनिफिट कर सकता है, या स्कोप कैसा है इंटरनेशनल जाने में. सी स्कोप तो है, ऐसा नहीं है. फॉर सो नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस. पहला, तो आप तो माइग्रेट ही कर रहे हो. अच्छा. ओके. ठीक है. दूसरा, यू आर गोइंग टू सम अदर कंपनी कंट्री फॉर कपल ऑफ इयर्स, एंड देन यू हैव प्लान्स ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया. ठीक है, जो कि काफी लोग करते हैं. पीपल गो टू यूएई, पीपल गो टू हांगकांग फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड देन दे कम बैक जस्ट टू मेक श्योर दैट they are learning best skills. ठीक है. So like with one of our MROs that we have, uh, people go out, people learn, and then they come back, and that's how they add value to Indian MROs or Indian airlines or companies who are well established in India. तो लोग करते हैं. That's their personal choice, but हाँ, I think it depends on person to person. Okay, okay. And what type of skills do they, like you mentioned that skills adaptability के हिसाब से चेंज होती रहनी चाहिए या अपलिफ्ट होनी चाहिए. सो ये कौन सी स्किल्स है? लाइक अगर मैं आपसे थोड़ा और इन डेप्थ जाके पूछूं,
व्हाट आर दी स्किल्स जो चेंज होती रहनी चाहिए, या व्हाट आर दी स्किल्स अ पर्सन शुड लुक ऑन, क्योंकि आई एम श्योर पीपल आर वाचिंग हु आर ऑलरेडी इन द सिस्टम, राइट, दे आर नॉट न्यू कमर्स। सो वो कौन सी स्किल्स पे अब से काम कर सकते हैं, या वो कैसी स्किल्स होंगी जो उनको गेम में रख सकती है? See, there are basically three things. ठीक है, IQ, ठीक है, what is IQ, Aryan? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, या EQ, इमोशनल क्वेश्चन। correct. There is another thing which is SQ, यस। and I always talk about these three things. So if you are a good employee, just an individual contributor, you need to have a good IQ. या ठीक है, so you will do, let's say if you are a graphic designer and you know what you are doing, you will do an amazing job. What if you have to become a manager now? राइट राइट, ठीक है, how will you grow? Of course you have to work on your skills, but the another requirement is EQ, emotional quotient. So you should know how to handle people. यस। ठीक है, so that's where most of these people lack. So ये जो ट्रांजिशन टाइम होता है ना, लोग यहाँ से फ्रॉम एसोसिएट टू लीड की जो जर्नी है ना, लोग उसमें स्टक हो जाते हैं। ठीक है, सो EQ is the another thing that you need. Now from a manager, if you want to achieve to the, if you want to go to the next goal, which is a leader, or CXO, or someone leveling up C level, from, yeah. you need to have strong SQ. For the audience, what would be the SQ is special quotient. So in short, मैं कैसे बताऊं? So in short, ओयो के CEO को सब जानते हैं, yes, रितेश अग्रवाल। yes. ड्यूरिंग कोविड होटल्स पे, एयरलाइंस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आया? I can relate, yeah. ठीक है, when everything is against you, how do you react? Okay. That makes that's what makes you a good leader. So इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो ये, so good IQ, good EQ, good SQ. Second thing, I call it 3H. Okay. Head, कोई आइडिया आया, you started working. Hands, so we have people, suppose कोई रिक्शा चला रहा है, या suppose someone is someone working as a labor कहीं भी, ठीक है, so he is not using his head, he's just using his hands. ठीक है, so it's a combination of head, hands and heart. Okay. So जब ये तीनों चीजें, very interesting, yeah, जब ये तीनों चीजें एक धागे में तीनों चीजें आती हैं, या जब तुम इन तीनों चीजों को समझ पाते हो, और व्हेन यू हैव these things in control, head, hand, and heart, ठीक है, और that's how you grow. Like when you should know when to stop this, maybe push this, stop this, push this, control it all over. Exactly. Yeah. So अगर तुम सिर्फ और सिर्फ दिमाग यूज कर रहे हो, तुम you will never grow. If you're just using your heart, you will never grow. Yeah. ठीक है, मतलब इमोशनल इन्फ्लुएंस में आके तुम डिसीजन ले लोगे, गलत डिसीजन लो। So use your hands, use your head, use your heart, you'll become a successful person. Another thing, so ये तो होगी बड़ी मोटी मोटी बातें। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट। So now you have to become a manager. You should know how to balance your professional and personal life. Yeah. ठीक है, you'll have kids, you'll have your family to take care of. That's two. You should know how to manage your time properly. Yeah. ठीक है, you should know how to control your finances properly. Yes. Yeah. मतलब I can give you multiple examples. ठीक है, but हाँ, overall to conclude this, I think 3H and IQ, EQ and SQ, these are three basic things that you have to ensure if you have to grow. Got it. So क्योंकि हमारे मेजर ऑडियंस हैं वो जो शायद अपनी करियर को स्टार्ट कर रहे होंगे, उनके लिए डू वी हैव एनी एडवाइस
क्योंकि मे बी इफ इट कम्स फ्रॉम अ इंडस्ट्री लीडर लाइक यू, मे बी वो उनके जहन में बैठ जाए एंड मे बी वो उसको फॉलो करना शुरू कर दे. सो एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू डायरेक्टली टेल देम, लाइक ये करो, ये मत करो. So you mean someone who is in, let's say, grade 11th, Yes. grade Yeah. 12? Who are yet to consider a career also. They don't know कि एविएशन ही करना है. मे बी एविएशन में इंटरेस्ट है, मे बी सिर्फ प्लेन को देखकर उनको लगता है कि हाँ भाई एक दिन मैं चलाऊंगा. See, एक चीज तो है कि we have a huge growth in aviation. Yes. So if you have even 2% interest in this industry, go for it. पहली चीज. Got it. Yeah. Now question comes, what to pick? ठीक है. What if you want to become a pilot or a ground staff or an aircraft engineer or aerospace engineer, whatever, जो भी इनके जो भी बनना चाहते हैं. So when you're in grade 11, start doing your research. At least Yeah. you figure out your long term goal. ठीक है. Based on your long term goal, you start evaluating where you are now. ठीक है. Okay. अगर मान लो अगर मैं दोबारा अगर मेरे को मौका मिले कि मैं वापस 10th 11th क्लास में जाऊं और मेरे पास इंटरनेट है. Yes. ठीक है. तो शायद मैं चीजें करता वो मैं क्या करता. ठीक है. सो मैं पहले ये डिसाइड करता कि ठीक है मेरे को 10 years डाउन द लाइन मेरे को इस लेवल पे पहुंचना है. नाउ टू अचीव, लेट्स से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, राइट. अब एक इंजीनियर बनने के लिए आई हैव टू पिक साइंस इन 11th 12th. I have to get at least, let's say, not less than 60% to make Yes. sure I get admission in good college. उसके बाद what is the syllabus about? क्या क्या चीजें होने वाली हैं, वो क्या क्या चीजें पढ़ाते हैं. ग्रेजुएशन या तुम्हारा वो जो कोई भी तुम प्रोग्राम पिक कर रहे हो उसके बाद व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज देयर इन द मार्केट. मैं कंसल्ट करियर कंसल्टेंट्स के पास जाता, उनसे मैं शायद रेफरेंस लेता कि अच्छा क्या क्या है क्या क्या नहीं है. और मेरे टाइम पे तो कोई स्पेसिफिकली एविएशन एरोस्पेस डिफेंस का कोई करियर काउंसलिंग वाला कोई ऐसा कोई प्रोग्राम को रन ही नहीं करता था, राइट. बट हाँ, सो मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल को बड़े छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेता. लेट्स से एक 6 6 महीने के, साल साल के. मेरे को 12th के एग्जाम तक मेरे को पता होता कि मैं कौन से कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ और मैं क्यों जाना चाहता हूँ. Okay. Yes. उस कॉलेज के प्रोज एंड Got कॉन्स it. क्या Got है, it. उस कॉलेज में कितने लोग, कितनी कंपनीज कैंपस हायरिंग के लिए आती है. So मेरे को उन सारी चीजों को पता होता. उसके बाद जब मैं कॉलेज में होता, सबसे पहली चीज मैं नेटवर्किंग करता अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ प्रॉपरली. और मैं इवन बाकी में देखता हूँ और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है नेटवर्किंग की. Yeah. ठीक है. मैं और इसमें मैं डिटेल में भी आऊंगा. सो आई हैव दिस सेपरेट सेशन और उसमें मैं डिटेल में कवर करूंगा कि Okay. जब आप कॉलेज में हो तब आपको क्या क्या वो 4 5 एक्टिविटीज करनी है. बाय द एंड ऑफ दिस podcast I'll try to finish it. Okay. But हाँ, ठीक है. I'll give you a brief idea. But हाँ, to start with, make sure you have your long term goal, and to achieve your long term goal, make sure you have done your pre planning. Okay. ठीक है. So, what kind of background is it required? Like, is it only science that will get you career in aviation, or other subjects के लिए भी कुछ scope है? Second thing, क्या कोई certifications required है? How can a person enter this field? Right? Let's say वो उनका 12th खत्म हो गया है. Now they are ready to go to a aviation academy, or they are ready to enter aviation world. Is there a specific background required? Yeah, what would be the go-to process for them? See, it depends. Mhm. It's a very vast industry. अगर किसी को पायलट बनना है, they should have at least science background or good percentage, 60 के Yes. आसपास लेके आओ if you want to pick a Mhm. good college. ठीक है. For an aircraft engineer, you get science and again good percentage. For a ground staff, for a cabin crew, if you are a non science student, you can go for it. Okay. ठीक है. Now to become a ground staff, there are companies who will give priority to
especially airlines. So even ground handling जो है, they can pick 12th pass, but with airlines they will prefer or they will give priority to graduates. Okay. ठीक All है, तो right. उनके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है. Mm-hmm. फ्लाइट ऑपरेशंस या मल्टीपल जो कॉर्पोरेट रोल्स हैं, सो दे विल प्रेफर graduates. Acha, another thing, if you want to become part of HR, they might ask you to bring your MBA in HR. So it depends Okay. आप कहाँ पे जाना चाहते हो Mm-hmm. एंड उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 12th, इन Mm-hmm. शॉर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th till MBA you have multiple options. एंड लाइक यू मेंशन कि नेटवर्किंग मैं टीचर से भी करता, स्टूडेंट से भी करता, so I'm sure networking holds some relevancy, Hmm. some importance in the field of aviation as well. क्यों करे कोई पर्सन नेटवर्किंग? लाइक एज यू सेड, एक पर्सन अगर अपना काम जानता है वो करते रह सकता है. सो नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट इन दिस फील्ड? सी नेटवर्किंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बड़ी लिमिटेड लोगों को नॉलेज है इसके बारे में. सो इफ यू ओके. नो समवन हु इज ऑलरेडी इन द मार्केट, हु इज ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री, ही विल टेल यू कि मार्केट में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. ओके. बिकॉज आपका बीइंग अ स्टूडेंट आपका एक सेपरेट माइंडसेट है. ठीक है, बट इफ यू नो पीपल इन द मार्केट, इफ यू नो someone who is already in the industry, we can guide you. Suppose abhi it's been 15 plus years I'm in the market, so I'm able to guide people. So यस. we या. have trained more than 1 million people for free. हम्म. तो अगर कोई उनके पास उनको उनको कोई ऐसा कोई सहारा मिल जाए तिनके को कि वो उनको गाइड, छोटे छोटे स्टेप्स में उनको गाइड करता रहे, तो उनकी लाइफ इतनी ज्यादा इजी हो जाती है ना कि वो लोग वट एवर दे वॉन्ट टू अचीव दे कैन अचीव इट इजीली. शायद उसमें क्या होगा कि अब सपोज को मेरे अंडर कोई काम कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि जो गलतियां मैंने करी है ना, ये बंदा ना करे. ट्रू. आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू मेक श्योर this person is growing. ठीक है, that's the reason you should have, you should do networking, you should make good connections, you should have a mentor हम्म. who can guide you through छोटे छोटे steps में आपको बताता रहे कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये ना करो, based on the information. And where can they do networking? Are there any platforms, or wherever they find a relevant match, wherever they find that this person can maybe be a mentor to me, they can directly connect? Is there a specific way of networking as well? Or the easiest way is LinkedIn. Yes. ठीक है, Okay. and I would recommend if we can do a separate podcast on LinkedIn, how to use LinkedIn if you want to grow in this industry. Got it. ठीक है, हम Yeah. लोग हमेशा हम लोग जरूर करेंगे. एंड दूसरा है, सो वी हैव मल्टीपल नेटवर्किंग एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन दिस इंडस्ट्री. हमेशा एविएशन में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते ही रहते हैं. कोई एमआरओ वाले इवेंट्स कर रहे होते हैं, Mm-hmm. कोई अभी रिसेंटली आई वेंट टू हैदराबाद, कोई तो ऐसा इवेंट था वेयर वेयर आई वेंट. तो ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं वेर इन एनीवन कैन कम. You can talk to HRs directly, you can talk to people who are from leadership directly, and they will actually help you. Got it. ठीक है, Okay. what option do you have being a fresher? Mm-hmm. ठीक है, या तो आप खुद की जर्नी पूरी करो, और यू टेक रेफरेंस फ्रॉम समवन, यू टेक हेल्प फ्रॉम समवन. अगर महाभारत में कृष्ण अगर अर्जुन के साथ नहीं होता तो क्या होता? Yes. As simple as it is. So, are there any trends that you see in this industry जो maybe उसको shape कर सकते हैं? Do you see some patterns जो maybe as a industry leader आपको दिख रहे हों, जो आगे की इंडस्ट्री के betterment और even to make it worse भी हो सकता है? So, are we seeing any trends जो अभी के लोगों में हम देख रहे हैं that can shape the future of aviation, aerospace or defense? So remember I talked about A taxi. Yes. Remember I talked about company called Archer. Yes. Yes. ठीक है, so they have a Indian origin CEO. Okay. ठीक है, so they recently got an approval from FAA. FAA is a Federal Aviation Authority or Administration, right? Just like DGCA. Now they can fly aircrafts, and they have a tie-up with United Airlines to make sure people they can
transfer from one place to another. At the same time, we have they tied up with IGT, with Yeah, Indigo. So that's the future. got it. EV aircrafts, that's the Yeah. future, right? Drones, that's the future. ओके एंड इफ लेट्स से फ्यूचर से पहले अगर आप कुछ खुद की लर्निंग्स फ्रॉम पास्ट और फ्रॉम प्रेजेंटली आप देना चाहो अपने व्यूअर्स को, मे बी योर टीम मेंबर्स आर आल्सो व्यूइंग इट, मे बी उनको आर देयर एनी लर्निंग्स जो एक होता है ना कि एक पर्सन के साथ वो बैठ गई है लर्निंग, वो अब कहीं नहीं जाने वाली, सो आर देयर एनी लर्निंग एज सच एज वेल? So it depends. So learning, आई वुड से इसमें दो कैटेगरीज हैं, हम्म। right? एक वो जो भी कॉलेज में है, एक वो हु इज डूइंग जॉब समवेयर. तुम किसके बारे में पूछना चाहते हो? आई मीन आई कैन बिगिन विद दिस फ्रेशर जो अभी देख रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि कैसे करना है, उसके लिए कोई लर्निंग। आई थिंक हमारे फर्स्ट फर्स्ट पॉडकास्ट में वी डिड मेंशन कि क्या जर्नी रहती है एक फ्रेशर की। आपकी खुद की जर्नी आपने रेप्लिकेट की थी वहां पे, आपने दिखाया था कि आपने बताया था कि कैसे कैसे यू एंडेड अप एज अ फाउंडर ऑफ एविएशन। So maybe a few learning. So maybe what we can do, one learning for a fresher, one learning for your team, or even a person who is already in the system. सो मैं तुम्हें ना दोनों की लर्निंग को मैं समेटता हूँ. इवन आई वुड से ये सबसे बड़ी लर्निंग सबके लिए होगी. कैसे होगी? रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट क्लैरिटी एंड Yes. कॉन्फिडेंस. Yeah. सो Yeah. हमें वी शुड हैव क्लैरिटी. Mhm. दैट्स द स्टार्ट. दैट्स द स्टार्ट. ठीक है. वंस यू हैव द क्लैरिटी आपको कहाँ पहुंचना है, यू विल स्टार्ट इवेल्युएटिंग, यू विल स्टार्ट you will start your research on Google. अच्छा ये ऐसे ऐसे होना है. Suppose if you want to go to let's say Airbus or some XYZ company, तो you will see अच्छा कहाँ कहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, Yes. क्या कर सकता हूँ. अच्छा now if you have experience of let's say 5 years, Mhm. now you want to switch to XYZ company, ठीक है, you will go to their career page. धीरे 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 so आपको पहुंचना कहाँ Yes. पे है आपको पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा. You will reach. किसी को 2 साल ज्यादा लगेंगे, किसी को कम लगेंगे, बट यू विल रीच. दिक्कत ये है कि लोगों को ये नहीं पता हमें पहुंचना कहाँ है. And okay, very personal question. It is approximate. Okay, it's 9 already, right? We are still talking about aviation, aerospace, and defense. मे बी कोई और सेक्टर होता तो आप इतनी बातें नहीं कर रहे होते. What is that something that is making you passionate about this? What, why are you so passionate about aviation, aerospace, and defense? For example, if I put it in that way. सो सी फॉर मी व्हाट सक्सेस इज, ठीक है, शायद मैंने कभी किसी को इस चीज के बारे में बताया नहीं, बट हाँ मैं कोशिश करूंगा बताने की. आई डोंट नो मैं बता पाऊंगा कि नहीं, बट हाँ फॉर मी सक्सेस इज if you look, once you are 50 or 60 years of age, and if you look back and see number of lives that you have enriched in your time span, or in your let's say 30 or 40 years of duration. So that's what success is for me. ठीक है. तो अगर मेरे को लगता है कि कुछ हजार लोगों के घर में खाना या दिए मेरी मेरी वजह से जल रहे हैं ना, Yes. आई थिंक वो मेरे को मोटिवेट करता है. मेरे को लगता है कि यार अगर ये बच्चा रिसेप्शन पे बैठा है और इसकी इसकी जो स्किल्स हैं, ही कैन डू अ बेटर जॉब, तो मैं उसको बोलूंगा चलो लेट्स गो एंड हैव अ टी. Yeah. तो हम लोग बात करेंगे. आई विल पुश हिम टू बिकम व्हाट ही वांट्स. हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस अलग हों. Yes. तो ये छोटी छोटी चीजें, मतलब किसी के स्किल्स को इवेल्युएट करके और वो जगह वो जो डिजर्व करता है उसको वहां तक पहुंचाना ना, मेरे को बहुत मजा आता है उसमें. ठीक है. क्यों क्यों मजा आता है, इस कारण बताऊं. क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है कि शायद अगर कोई मेरे को अच्छे से मेरे को गाइड कर पाता, जो मैंने धक्के खाए हैं, शायद कोई होता जो मेरे को हेल्प कर पाता. और इवन मेरे जो साथ वाले जो कॉलेज मेट्स थे, शायद कोई उनको अगर कोई बेटर गाइड कर पाता ना, Yeah. वो लोग बहुत अच्छी जगह पे होते. हम लोग शायद इससे और ज्यादा बेटर कर रहे होते. तो वो ये जो छोटा सा गैप है ना, इसको मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए भैया कभी नहीं.
सो यू आर टेकिंग वन फॉर द टीम, लाइक एग्जैक्टली। मैं आगे जाके कर देता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे को लगता है मेरे कंधों पे है ये भार हाँ कि हाँ। अगली जनरेशन जो इस इंडस्ट्री में आ रही है, हम्म, वी हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर देन 10 बिलियन पीपल। उसमें से मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, कितने लोगों को मैं बढ़ा सकता हूँ, कितना मैं इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, हम्म। वो है बस। उसके लिए तो कभी भी जगा लो, कितने बजे मर्जी कॉल कर लो, आई विल बी देयर। So one thing is for sure here, there are two type of leaders. We have seen this because we have also worked in different companies. We have heard about different stories, corporate culture, etc., etc. So two types of leaders are there. मेरे साथ बुरा हुआ, मैं तेरे साथ बुरा कर दूंगा। मेरे साथ बुरा हुआ, मैं इंश्योर करूंगा मेरे आगे वाले के साथ बुरा ना हो। आई थिंक यू आर द लैटर, जो सेकंड वाला लीडर है। वैसे आपको लोग देख सकते हैं इस पूरे सेगमेंट में, राइट? So yeah, I mean kudos to that. I सो mean, सो देयर इज दिस थंब रूल दैट आई फॉलो, आई mhm. कॉल इट 40 30 20 10। Okay. ठीक है, आई डोंट नो हमारे पास कितना टाइम है, बट हाँ, आई विल ट्राई टू Mhm. कीप इट शॉर्ट। सो 40% लाइफ में तुम्हें चीजें अपने आप मिल जाएंगी, Okay. बीट योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। चालीस Mhm. परसेंट चीजें तुम्हें खुद ही मिल जाएगी विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट। Okay. Mhm. 30% के लिए, ठीक है, ये हो गया 40%। Mhm. देन आई सेड 40 30 20 10। Yes. 30% में यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। Mhm. ठीक है, तुम्हें मतलब यू आर कॉलिंग योर क्लाइंट एवरी डे, यू आर कॉलिंग कॉलिंग एवरी डे एंड सेइंग कैन वी मीट। हो सकता है वो मिले ना मिले, यू नेवर नो, राइट? सो 30% चीजों के लिए यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स Mhm. इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। ठीक है, कि सपोज यू हैव अ वाइफ और यू हैव अ गर्लफ्रेंड और समवन, सो टू मेक श्योर यू हैव अ स्टेबल पर्सनल लाइफ, तुम्हें वो 30% एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चॉकलेट लेके जा रहा है आर्यन, शॉपिंग करवाने लेके I जा रहा है, wish. I wish. ये सारे जो 30% एफर्ट्स ये तुम्हें डालने पड़ेंगे। Yes. 20% चीजें, ठीक है, अगर मैं अगले 20 पे आ रहा हूँ, 20% चीजें तुम जितने भी एफर्ट्स डालो तुम्हें नहीं मिलने वाले, जो मर्जी कर लो, Okay. That's जो मर्जी तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, disheartening. Okay. तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। 10%, 10% लोग तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, चाहे वो तुम्हारे पार्टनर्स हो, चाहे वो तुम्हारे सेम कुलीग हो। Mhm. easiest way is to delete their WhatsApp number or their number from your phone directory, that's it, you don't have to do anything I about it। can do that. ताकि जब तुम उनका लिस्ट में देखो, स्क्रॉल करो और उनका कोई स्टेटस तुम्हें लग रहा है कि अरे यार ये तो से नहीं, How that pulls you back. ठीक, हाँ, Yeah. इसलिए उनको अपने लिस्ट में से निकाल दो। Got सो it. दैट्स द 40 30 20 10 थ्योरी दैट आई यूज। Okay. Okay. So definitely मेरा last question था your viewers के लिए message. However, I would want to add just one more question here. It's not a question, just a basic guidance to us, to the viewers. Uh, I see that the thoughts are very aligned for you, right? Definitely, there is a lot of reading that you do. We can see it from your speeches that you gave it. I think Indian Staffing Federation में आपकी एक speech भी थी. Then there are a few books that you would want to recommend to people who are viewing us. Are there any books that you have in mind presently? I know I'm putting you in a spot here, but are there, let's say, three books that you would want everyone to read if you were, let's say, a educator? You would bring that book to a curriculum, let's say. अंडरस्टूड। सो आई यूज टू हेट बुक्स, Oh, is आई यूज it? टू हेट बुक्स। सो My जब मेरी 12th God. खत्म हुई ना, मैंने ऐसे सारी बुक्स फेंकी। Mhm. मैंने कहा शुक्र है, अब मेरे को पढ़ना नहीं पड़ेगा, कॉलेज जाऊंगा, ऐश करूंगा। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय कॉलेज, इतना ज्यादा प्रेशर, यू हैव टू हैव एटलीस्ट 70% पासिंग मार्क्स, बढ़ गया। स्टिल कोई मेरे को बोलता था, सो कपल ऑफ माय कॉलेज मेट्स, दे वर इनटू रीडिंग बुक्स। मैंने कहा Oh. तुम पागल हो क्या, मतलब तुम पहले पहले अपना तुम ये एग्जाम्स के लिए तुम पढ़ाई करते हो, देन उसके बाद तुम एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हो। मैंने Mhm. कहा आई कैन नॉट रीड बुक्स, बट व्हेन आई स्टार्टेड एविएशन इंडीड, that's how I started reading books. So
अगेन मैं तो हमेशा चीजों की रेफरेंस देता हूँ. तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? So as a non-veg eater, anything that is made out of chicken maybe. तुम्हारा Or फेवरेट शू ब्रांड? for me, 12 size or 13 size, I think Baka Bucci will be my go-to shoemaker. ओके. With and with those who are watching it, Mm-hmm. 80% people, they know what they like. Yes. खाना ये वो सारा. Yeah. So what they are doing is they are feeding below the neck. Mm-hmm. They know what to wear, कौन सा shoes, क्या watch, क्या belt. Yes. They know what to wear. Mm-hmm. The mistake that we do is we do not see what is there above the neck. Okay. So Got it. we know what to feed below the neck, but what to feed above the neck Mm-hmm. will decide where you will reach. So that's how I started understanding why books are, your best friends. Okay. Mm-hmm. ठीक है. उसमें मैं आता हूँ कि बेस्ट Mm-hmm. वो 3 बुक्स क्या हैं, कौन सी होंगी. बट वाई बुक्स आर इम्पोर्टेंट, कि जो आप सोचोगे ना, जो आपके दिमाग में थॉट आ रहा है ना, आप उससे पहले आपके दिमाग में एक अच्छा थॉट आना बहुत जरूरी है. Yes. थॉट्स कहाँ से आएंगे, आइडियाज कहाँ से आएंगे? Brain. आपके जो 4-5 फ्रेंड्स है वहां से आ रहे हैं. Mm-hmm. व्हाट यू रीड, व्हाट यू सी, व्हाट यू लिसन, वहां Mm-hmm. से आ रहे हैं. सो यू नीड टू हैव अ फिल्टर्ड थॉट प्रोसेस. हाउ डू यू गेट इट? बाय रीडिंग बुक्स, by doing meditation, yoga, by sitting with right people. और बोलते हैं, तुम शायद काफी बार सुना होगा कि शो मी योर फ्रेंड्स आई विल टेल योर फ्यूचर. Yeah. तो ऐसा ही होता है. ठीक है. तो ये बैकग्राउंड है. सो यूजुअली लोग अंडर द नेक, उनको दे नो बिलो द नेक क्या करना है, बट अबव द नेक उनको कैसे यूज करना है इस भेजे को, दे हैव नो आइडिया. Mm-hmm. ठीक है. सो based on my recommendation, books I have read in the past, or based on क्योंकि मेरे को भी कहीं से रेफरेंस मिलता है कि नहीं, ये बुक पढ़ो तो ये मिलेगा. सो आई रेड कपल ऑफ बुक्स इन लास्ट फ्यू इयर्स. बट हाँ, टू स्टार्ट विद, अगर किसी ने अभी तक बुक्स नहीं पढ़ी है ना और उसको दे वांट टू स्टार्ट इट, आई थिंक दे शुड स्टार्ट रीडिंग दिस बुक कॉल्ड एटीट्यूड इज एवरीथिंग. Okay. उसमें इन शॉर्ट दे से थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव. अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे एंड अच्छा ही एक्ट करोगे. दैट्स द वन बुक व्हिच आई थिंक जेफ केलर की बुक है. सो सेकंड बुक आई वुड रेकमेंड वुड बी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल. सो पहली बुक आपको ये समझा देगी कि यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन. Yeah. ठीक है. आपके थॉट्स ही ऐसे ऐसे आपको आएंगे. यू विल फिगर आउट एक इंसान और एक जानवर में क्या फर्क है. यू विल फिगर आउट why are you on this earth. Mm-hmm. ठीक है. what is the contribution that being a human we are doing for the society. Yeah. what is our short term objective, long term objective, what makes us different from animals. वो animals के जानवरों के पास ऐसी क्या चीज नहीं है जो हमारे पास है. they eat, they they reproduce, but हम वो ऐसी क्या चीज हैं जो हटके कर रहे हैं, जो हटके कर रहे हैं. राइट. सो वी थिंक एंड वी प्लान एंड देन वी एग्जीक्यूट. इंसान वो जानवर नहीं कर सकते ना. सो दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस बुक, एटीट्यूड एवरीथिंग. नाउ यू वंस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को क्या करना है, क्या बनना है, और हाउ आर यू गोइंग टू ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ, यू रीड दिस बुक कॉल्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल. उसमें उन्होंने डिवाइड करा हुआ है what is that you need to become a successful people based on the research that they have done. Right. So research, when I see uh, you know so second would be to become a successful person, you should read 7 habits of highly successful. Okay. Now you are a successful person, okay, but you don't know how to manage your finances. So recently I read this book by अंकुर वारिको. बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन करा,
एट द एज ऑफ 20 यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कहाँ पे करना है, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू बिकम अ मिलीनियर इन नेक्स्ट 10 years. I think these three books will help you understand the way how you want to grow. Good. Okay, so last question that will wrap this podcast up is your direct message to the audience. Yes, we did it last time also, but the topics that we have talked about today are very different. So, anything that you would want to tell to the viewer? Yeah, go Yep. ahead. So I think it will not matter which industry you pick, but all I want to say is have clarity on what you want to do. Hmm. ऑफ कोर्स एविएशन एरोस्पेस डिफेंस में फ्यूचर है, आईटी में भी होगा, कनाडा जाने वालों को कनाडा में भी मिलेगा, यूएस वालों को यूएस में मिलेगा. बट हाँ, एज फार एज योर करियर ग्रोथ इज कंसर्न, लुक एट द बिगर पिक्चर. जॉब करके और पैसे कमाना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. Got it. सो वी Yeah. हैव अ बेटर थिंग्स टू डू हियर ऑन अर्थ. Hmm. ठीक है. सो हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं, दैट विल मैटर. और उसके Got it. लिए इफ यू फील कि मैं बीबीए करके और अकाउंटेंट बन जाऊं, या मैं कई छोटी सी नौकरी कर लूं, नहीं, Mm-hmm. फिर Yes. तुम्हारे और जानवरों में कोई फर्क रहा नहीं है. Hmm. सो थिंक बिग, थिंक बिग, दैट्स इट. Great. That's very inspiring. Thank you so much for all these insights. I'm sure anyone who is watching this podcast would either draw parallel or will get inspired, right? To the audience, thank you so much for tuning in. This will be the end of the podcast, and yes, there are n number of podcasts coming in, various topics, various interesting guests coming in this aviation indeed channel. And yeah, as I say, like, subscribe, comment, share तभी करो जब आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगे. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. थैंक यू.